इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली कामयाब पाकिस्तान वाटर वीक 2023 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई, जहां जिंदगी और तरक्की में पानी के किरदार को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का इजलास हुआ। इख्तितामी तकरीब 3 दिन के गहरे मुबाहसों, ताउन और पैनल बहस का इख्तिताम थी, जो पाकिस्तान में पानी और खुराक के निज़ाम की मनसूबाबंदी और इंतज़ाम के मंजरनामे को नई शक्ल देने का वादा करती है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस इवेंट में ये पाकिस्तान वाटर वीक का इवेंट था, पूरे वीक का इवेंट है। इसमें ये 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और इसके बाद 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में है, जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो इसका ये है कि इसमें हमारे 3 थीमेटिक एरिया थे और 24 थीमेटिक सेशन थे, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने भी पार्टिसिपेट किया है और पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स थे वो भी आए हैं। और इसमें डेलिब्रेशंस हुई हैं बाकी काफ़ी हद तक, और जो भी इसमें वे फॉर दी रिकमेंडेशंस निकलेंगी डेफिनेटली उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। The panelists discussed the challenge of shrinking collaborative space and the need for the government to play a leadership role. Importance of engaging communities to develop low-cost but acceptable solutions and capacity building needs while reducing inequalities were also highlighted. In the final session that just concluded a few minutes ago, the discussion revolved around the role of climate risk analysis in improving resilience of agricultural systems. Hafiz, Director, Water, Food and Ecosystem at International Water Management Institute. ये 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान वाटर वीक, जो हमने 2021 में स्टार्ट की थी। उसका 3rd इवेंट था, फ्लैगशिप इवेंट, आज 3 दिन में चल रहा था। इसमें पाकिस्तान की जो वाटर्स के इश्यूज़ हैं और जो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में 90% पानी यूज़ होता है, तो पानी की कमी आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, हमने सोल्यूशन डिस्कस किए और ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे पाकिस्तान में अप्लाई किया जा सकता है ताकि वाटर और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। उससे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहती हैं, साउथर्न पंजाब में है, सिंध में है, उनका लाइवलीहुड बेटर हो सके ताकि पानी उनके लिए भी अवेलेबल हो और आइंदा फ्यूचर जनरेशन में के लिए भी पानी अवेलेबल हो। A landscape approach, we're also thinking about the environment. So session number 7 was dealing specifically with a very promising initiative, which is the Living Indus initiative, and then the particular issues related to how to implement such an initiative, including governance issues from the basin level all the way to the micro basin scale, and finally issues of environmental flows and what are avenues or potential pathways for implementing the topic of environmental flows into national policies and strategies. So I think to conclude, the journey has been very, very rich. We have touched upon on general issues. We have gone from the global level all the way to the micro basin level. So institutional aspects of implementation were really at the core of our discussions, but also thematically we were focusing from the global issues of water governance, our starting point, to policy coherence issues on implementation, for example, of the Wi-Fi nexus, all the way down to specific strategies on how to implement and how to improve on specific aspects of that nexus, including the environment. Been for 3 days at a conference called Pakistan Water Week, in which we've looked at issues around water security in Pakistan. So how do we make sure that everyone in Pakistan who needs water, which is everyone, has the water that they need, whether that's for food production, whether it's in cities, whether it's in industry, whether it's for energy production, etc. So we brought together a range of different experts from Pakistan, different partners and organizations in Pakistan, as well as internationally, to say what's the latest science, what's the latest innovation, what's the latest analysis that we can use to help governments, help communities, help the private sector to manage water better and create water security for Pakistan, strengthen food security for Pakistan, help Pakistan be more climate resilient as we look into the future. Changes in information and extension services to change cropping patterns and have improved technologies of seed, etc., were addressed there. The need for even definitions of
what a drought is, were things that are required in order to have a technology improvement go forward. So, Honourable President, here at Pakistan Water Week, a set of conclusions the participants have come to a set of conclusions. The first set are around the issue of climate mitigation and adaptation. अब जैसे जैसे ये एहसास होता चला जा रहा है कि पानी की मिक़दार कम होती जा रही है और तो लिहाजा इसके साथ साथ एक परेशानी है। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि जब पानी कम हो जाए तो जो एग्रीकल्चर के तरीके थे, जिसके अंदर अभी मैंने फिगर सुना कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 95% पानी जो है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, तो जो एग्रीकल्चर के तरीके थे उसकी कंजर्वेशन के एतबार से जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एटीट्यूड्स के एतबार से तब्दीली होनी चाहिए। दूसरे ये कि हमारे स्टोरेज बेहतर होने चाहिए ताकि हम पानी की किल्लत के ज़माने में पानी को इस्तेमाल कर सकें। ये सारे साल पाकिस्तान की पानी के बहाव के लिए सिर्फ इंतज़ार ना करें कि सिर्फ जिस ज़माने में बहाव बेहतर है वहाँ पानी की बहुतात है और बहाव की किल्लत हो जाए तो पानी की किल्लत हो जाएगी। और जिस एतबार से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, और जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वो जो स्टोरेज साफ पानी का था पहाड़ों पर पाकिस्तान के हिमालयाज़ के अंदर और कराकोरम रेंजेस के अंदर, वो जैसे हमारा स्टोरेज का पानी कम होगा तो पानी की सप्लाई भी कम होगी।